ಶಾಲೆ ಗಂಗಾವತಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಡೇ ಆಚರಣೆ. ಇದು ಜೂನ್ 19ನೇ ತಾರೀಕು ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಡೇ ಆಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಲಿಟ್ಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಓದುವುದರ ಮಹತ್ವ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಆಲಂಪಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾ ಕುಮಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಡೇ ಆಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು, ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ಗಳನ್ನು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಬರುವ ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೂ ಕಥೆಯ ಅಥವಾ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿ 1 ವಾರದ ಸಮಯ ನೀಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಓದಿ ವಾರದ ನಂತರ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ 1500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು 1 ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ಈ ಆಚರಣೆ ಮಹತ್ವ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. Some algae and protozoa are multicellular, such as many algae and fungi. They live in all types of environment, ranging from ice, cold climate to hot springs, and deserts to martial lands. They are also found inside the bodies of animals, including humans. Some microorganisms grow on other organisms while the other exist freely. When the donkey learned what his owner was going to do, he ran away from there. I will go to the city and become a musician, said the donkey to himself. On his way, the donkey met an old dog, a toothless old cat, and a pug. They all had the same story to tell. They were too old to work, and their owners were going to kill them, so each of the animals had run away. Come with me to the city, said the donkey. You can also become musician. Okay, next line. पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है. पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है. थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम. थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम. पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है. पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है. थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम. थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम. इम्तिहान में ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम. इम्तिहान में टाल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम. पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है. पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है. फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मजे के दिन. फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मजे के दिन. पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन. पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, होंगे मौज मजे के दिन. पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है. पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है. थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम. थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम. पापा मम्मी से लेनी है फिर तो हमको खूब इनाम. पापा मम्मी से लेने फिर घर में इनाम. मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान. मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान. मेहनत
मेहनत करने वालों की तो सदा करते थे भगवान। मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। जीवन पथ पर बढ़ना है जी पढ़ना है। 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 पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। ओके बच्चों, सभी लोग पढ़िए और अच्छा जिंदगी प्राप्त करें। धन्यवाद। ये हम पढ़ने से हम क्या हम लोगों को क्या क्या मिलता है और पढ़ने से हमारा जीवन कैसा होता है, इसको हम एक पोयम के जरिए यहाँ पर गाना गाकर बताते हैं। ओके। P.N. Panikkar, he is the father of library movement. He is from Kerala. P.N. Panikkar was an eminent educationist. He promoted education. We know Kerala is the zero illiteracy state because he wandered almost so many villages and encouraged students, children for education. That's why Kerala is illiteracy state, zero illiteracy, all educated only. So, because his death anniversary June 19, so for the honor of P.N. Panikkar, this day is celebrated as National Reading Day. How many of you are reading books daily? Textbooks? Okay, any book you should read, you should cultivate the habit of reading books. Okay, books give us knowledge. You can improve your personality development and you get knowledge. So, okay, hands down. You should read books, especially high school students. Read books, not only your class books, other books also. This year actually we planned this day to open our library. Because of delay of the work, it's postponing to next month. So today onwards, you should promise yourself, you should read a book, at least a book for a week. Already I think you observed in your timetable. Library period there or not? One period, library period. From next month, you will get weekly one book. You should complete that book. You should read that book within that week, and you should give back that book. Next week again you will get one more book. Okay? Like that you should cultivate the habit of reading books. Will you do that? Okay. Anyhow, after this prayer you should go to class. Second period class wise with your teacher. You should come to ground with any textbook. Okay? Let's read a book. At least half an hour to honor P.N. Panikkar. Okay? Thank you.